After the neuronal tumors comes the poorly differentiated neoplasms. Poorly differentiated neoplasm especially इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुअरली डिफरेंशिएटेड नियोप्लाज्म्स को हम पीडियाट्रिक ट्यूमर्स भी कहते हैं या फिर एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे अपीयर प्रिमिटिव और अनडिफरेंशिएटेड। या आप नियोप्लाज्म देखोगे ना, जो इसके ट्यूमर के सेल्स होंगे बेटा वो काफ़ी अनडिफरेंशिएटेड होंगे, ठीक है। अब वो पता नहीं चलेगा कि जो ट्यूमर सेल्स है ये आखिर है क्या, मसल है, न्यूरॉन है, ग्लायल सेल है, कौन सा टिश्यू है। Although limited degree of neuronal and less commonly glial differentiation is often seen. Look, what I'm trying to say is, this is the brain tissue. Okay, this is the brain tissue. Not really happy, very sad. Obviously going to develop the tumor. So this is your brain tissue, and here in the brain tissue you develop this tumor. You develop this tumor, and if you take one tumor cell out and you look into this tumor cell and you find that this tumor cell is very much undifferentiated. You can't differentiate it if this is a neuronal cell, glial cell, muscle cell, bone cell, skin cell, hair cell, what. So there is, इसी वजह से तो हम इसको poorly differentiated neoplasm कहते हैं, they appear primitive or undifferentiated. लेकिन याद रखें, जो poorly differentiated neoplasms होते हैं उनमें भी there are few cells you will come to see, okay, this is a neuronal cell, okay, this is showing the glial differentiation. So although there is a limited degree of the neuronal and उससे बहुत कम glial differentiation is often seen, okay. And the most common poorly differentiated neoplasm is medulloblastoma. It makes up the 20% of the pediatric brain tumors. What? Say it loudly. Medulloblastoma. Medulloblastoma is what? Most common pediatric tumor of the brain. Okay, so let's talk about the medulloblastoma. Okay, there we go with this bad boy, medulloblastoma. Medulloblastoma, it's a malignant embryonal tumor. Embryonal tumor कहें, undifferentiated tumor कहें, pediatric tumor कहें. The site is the cerebellum, not the cerebrum. Remember. And although it is a poorly differentiated tumor, you never know the tumor cells are of what variety exactly, but some differentiation is found. And what is that some differentiation? That the tumor cells may be, you come across the medulloblastoma and blastoma and you see, okay, this is the medulloblastoma, and you took some cells of the medulloblastoma out and you look into those tumor cells under the microscope, you will find, okay, this is poorly differentiated tumor. We can't say that what cells are exactly there, but you will come to find few cells that will be more like neuron, that will be more like glial cells. ठीक है, और इसी वजह से you will come to see the neuronal and the glial markers as well. So medulloblastoma express neuronal and glial markers. Although it is a poorly differentiated tumor, you don't know the tumor cells are of what variety, neurons, glial cells, skeletal cell, muscle cell, bone cells. But if it is expressing the neuronal and glial markers, then this is a very good hint that this medulloblastoma showing some tumor cells which are having to some extent neuronal and the glial differentiation. And don't forget, this is grade 4 tumor, grade 4 high grade tumor, because it is largely undifferentiated. 100 में से 90 सेल्स ऐसे होंगे जिनको आप पहचान ही नहीं पाएंगे किस तरह के सेल्स हैं. 10 सेल्स होंगे जो बोलेंगे ओके ये न्यूरोनल सेल्स हैं, ये ग्लायल सेल्स हैं. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. और इवन मेडुल्लोब्लास्टोमा के पीछे क्या म्यूटेशन है उसके बेस पे हमने ये मेडुल्लोब्लास्टोमा की पूरी क्लासिफिकेशन बना ली है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी म्यूटेशन, मतलब कि कौन सी म्यूटेशन मौजूद है. नंबर 1 टाइप ऑफ द मेडुल्लोब्लास्टोमा is the WNT type and number 2 is the SHH type. और 2 और टाइप्स हैं उसको ज़रा डिस्कस करेंगे. ये टाइप्स किस बेस पे हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइंग म्यूटेशन इन द मेडुल्लोब्लास्टोमा. So WNT type of the medulloblastoma, there is mutation in the, as the name indicates, the WNT signaling pathway. So and this type of mutation occurs in older children,
और WNT के अलावा कुछ और म्यूटेशंस which may be associated with the WNT signaling mutations like the monosomy of chromosome 6 and nuclear expansion of the beta catenin proteins. And if you develop the medulloblastoma due to this mutation, in that case prognosis is going to be very best and the survival is 5 years or more. So the very first type of the medulloblastoma we discussed is WNT type. What type of medulloblastoma is said to be WNT type? In which the underlying mutations are in what gene? WNT signaling pathway. If the mutations are in WNT signaling pathway, or maybe it show monosomy of chromosome number 6 and the nuclear expansion of the beta catenin, WNT type, कोई मुश्किल नहीं है. Then is the SHH type. The underlying mutations are in the sonic hedgehog signaling pathway and may have another mutation, that is the gain of function mutation amplification in the MYCN gene. ठीक हो गया जी. दो म्यूटेशन से याद रखना SHH टाइप में, मेनली सोनिक हेजहॉग पाथवे में और MYCN के अंदर. ठीक है जी. इसके अलावा प्रेजेंटिंग एज इन्फेंट्स में भी हो सकता है, यंग एडल्ट्स में भी हो सकता है. प्रोग्नोसिस इसकी कंपेयर टू WNT टाइप बेस्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है बिटवीन WNT एंड बिटवीन ग्रुप 3. WNT जितनी अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है, ग्रुप 3 जितनी बुरी प्रोग्नोसिस नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है. ठीक है जी. चलिए अब इसके बाद दो और टाइप्स आपके मेडुल्लोब्लास्टोमा की डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग म्यूटेशंस. ग्रुप 3 medulloblastoma, group 4 medulloblastoma. It is said to be group 3 medulloblastoma when the underlying mutations are MYC amplification, that is the gain of function mutation in the proto-oncogene MYC. यहाँ पे MYCN था, remember this is the MYC amplification, and mutations in the isochromosome 17. Right, in the very first type there was the monosomy of chromosome 6 and here is the mutation in the isochromosome 17. इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में ये एज ग्रुप ऑलमोस्ट सबका सेम ही है. ठीक है. एंड इट हैज़ गॉट वर्स्ट प्रोग्नोसिस. WNT सिग्नलिंग पाथवे में म्यूटेशन, सोनिक हेजहॉग पाथवे में म्यूटेशन, MYC में म्यूटेशन. ठीक है. बेस्ट प्रोग्नोसिस, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस, वर्स्ट प्रोग्नोसिस. व्हाट अबाउट ग्रुप 4? देयर इज अ म्यूटेशन इन द 17 आइसोक्रोमोसोम 17. आइसोक्रोमोसोम 17 में म्यूटेशन तो यहाँ पर भी थी, लेकिन इसके साथ MYC में भी म्यूटेशन थी. यहाँ पे 17 पे म्यूटेशन है विदाउट MYC म्यूटेशन. ठीक है. MYC के साथ तो नहीं होती, लेकिन समटाइम्स MYCN एम्प्लीफिकेशन ज़रूर हो सकती है. यहाँ पे क्या था ग्रुप 3 में? आइसोक्रोमोसोम 17 और MYC. यहाँ पे आइसोक्रोमोसोम 17 तो म्यूटेशन है, लेकिन MYC नहीं होता. समटाइम्स MYCN ज़रूर हो सकता है. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. व्हाट अबाउट द प्रोग्नोसिस? It is intermediate or sometimes maybe poor, right? और ज़्यादा आपने खुद को इसमें confuse नहीं करना. So we're talking about the medulloblastoma, how interesting it is on the basis of the underlying mutations. Now it's time to discuss the morphology of this bad boy, medulloblastoma, right? So let's talk about the morphology. The morphology of medulloblastoma beta. Earlier I mentioned that it arises from the cerebellum. बच्चों के अंदर ये सेरिबेलम में से राइज होता है मिड लाइन से. ठीक है. मोर फ्रॉम द मिड लाइन. एंड एडल्ट्स में भी सेरिबेलम से राइज होता है, बट जो उसके लेटरल लॉब्स होते हैं वहाँ से राइज होता है. ठीक है. काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है ये बेटा. और जाहिर सी बात है बेटा, अगर ये आपका बीच में ब्रेन स्टेम है और इधर से आपका दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं, सो दिस इज अ रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर. सो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है, तो जो CSF का फ्लो है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ये ट्यूमर. ठीक है. सो इट विल ऑक्लूड द CSF फ्लो, जिसकी वजह से पीछे CSF जमा होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोसेफलस. राइट. If you look into this tumor grossly and under a microscope, grossly this tumor is really good looking tumor. This is the tumor from the cerebellum and grossly well circumscribed tumor, gray
colored friable extending to the surface of the cerebellar folia and involve the leptomeninges, the inner two layer of the meninges, pia mater and the arachnoid mater, right? So I hope it is very much clear, not really difficult. Grossly, if you look into this tumor, isn't it very much well circumscribed? It is. And extend to the surface of the cerebellar folia, और बाहर की तरफ ही जाता है ट्यूमर. और अगर ये जो सर ऊपर मेनिंजीज है ना, सबसे अंदर वाली फिर बाहर वाली फिर बाहर वाली, जो इनर टू होती हैं उनको ये इन्वॉल्व करता है. ठीक है, इस तरीके से. सो दिस इज़ द ग्रॉस अपीयरेंस. But what about if we look into this tumor under the microscope? You will obviously under the microscope see the tumor cells. And there will be the sheet of the anaplastic cells. Individual tumor cell is small, with a scant cytoplasm, hyperchromatic nuclei. Nuclei may be crescent shaped. So if I draw it, the individual medulloblastoma tumor cell is small. You can see it's small. And the cytoplasm is very much scant, and the nucleus is present inside, and this nucleus is having very hyperchromatic dense nucleus, and this nucleus may be sometimes crescent shaped. Mitosis in this tumor is very much high. This is a high grade tumor with lots of mitosis, and the markers of the cellular proliferation, इतनी mitosis होती है that Ki67 जो होता है सेलुलर प्रोलिफरेशन का मार्कर वो काफ़ी हाई होता है. ठीक है. एंड द ट्यूमर्स में एक्सप्रेस द न्यूरोनल और द ग्लायल मार्कर्स, एज आई मेंशन के फ्यू सेल्स शो द न्यूरोनल डिफरेंशिएशन एंड वेरी फ्यू आल्सो शो द ग्लायल मार्कर्स, ग्लायल डिफरेंशिएशन एज वेल. सो यू विल कम टू फाइंड द न्यूरोनल मार्कर्स एंड द ग्लायल मार्कर्स एज वेल. न्यूरोनल मार्कर्स जिसको हम न्यूरोसेक्रेटरी मार्कर्स भी कहते हैं. So what happens, the granules are released from the humerite rosettes as it occurs in case of neuroblastoma as well. And what about the glial markers? Jaffa positive. मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि जो आपका मेडुल्लोब्लास्टोमा, इसकी आपको ग्रास अपीयरेंस समझ आ चुकी. माइक्रोस्कोपी पे मैंने आपको बताया कि ट्यूमर सेल काफ़ी छोटा होता है, साइटोप्लाज्म काफ़ी स्कैंट होता है, न्यूक्लियस हाइपरक्रोमेटिक डेंस होता है, माइटोसिस काफ़ी भरपूर चल रही होती है, और इतनी के सेलुलर प्रोलिफरेशन के जो मार्कर्स होते हैं Ki67 वो एलिवेट होता है. न्यूरोनल मार्कर्स देखने को मिलेंगे, ग्लायल मार्कर जफा पॉजिटिव, न्यूरोनल मार्कर्स ग्रेन्यूल्स खास करके देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस ट्यूमर के अंदर हुमराइट रोजेट्स बनते हैं और उन रोजेट्स में से ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं. ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. देयर आर टू वेरिएंट्स बेटा ऑफ दिस medulloblastoma. One is the nodular desmoplastic variant and one is the large cell variant. What is the difference between these two variants of the medulloblastoma? What is the difference between the two? The nodular desmoplastic variant, it is characterized by the stromal response, that is lots of the collagen and the reticulin deposition, and the nodule of cells forming the pale island that have more neutrophil plus the increased expression of the neuronal markers. Do you understand this variant beta? What I am trying to say, that if this is the tumor, in this tumor you will find lots of desmoplastic response. What does this desmoplastic response mean? That there will be lots of collagen, lots of reticulin deposition. ठीक है. And these are the tumor cells. Yeah, these are the tumor cells forming the pale islands. और इनके जो न्यूरोपिल्स होते हैं, जो डेंड्राइट्स और एक्सोनल प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, इस तरीके से. So I hope it is clear to you beta. Right. So nodular desmoplastic variant, with the background having lots of desmoplastic response, lots of collagen and reticulin deposition, the cells forming the pale islands, yeah, that have more neuropils, and there is increased expression of the neuronal markers especially. And the large cell variant, there is a difference obviously.
what happens in the large cell variant, there is actually the presence of the large irregular vesicular nuclei of the tumor cells. Tumor cells show the prominent nucleoli, and the frequent mitosis in the apoptotic cells. So you can find one of these two variants in the medulloblastoma, right? What two variants? Nodular desmoplastic variant and the large cell variant. If the tumor cells are placed in this desmoplastic response of collagen and reticulum, it is said to be the nodular desmoplastic variant of the medulloblastoma. But if there is no such collagen and reticulum deposition, there is only the vesicular nuclei, prominent nucleolus, large cells, said to be the large cell variant of the medulloblastoma. All is distinguished under the microscope, right? So I think it is easy now. Okay, so we are done with the morphology part as well, I hope. Yeah, last thing, and then the clinical presentation. Okay, last thing is if this is the, let's suppose, medulloblastoma, right? If this is the medulloblastoma, okay, this is the medulloblastoma, and at the edges of the tumor there is the linear chains of cells infiltrating through the cerebellar cortex and penetrating into the pia mater and then into the subarachnoid space. What I'm trying to say, that this is the main tumor, and these are obviously, what I'm drawing is the edges of the tumor. From the edges of the tumors, linear chain of cells, yeah, it infiltrate through the cerebellar cortex और बाहर कौन सी, पिया मेटर, फिर उसके नीचे एराक्नॉइड मेटर और उससे बाहर ड्यूरा मेटर, एराक्नॉइड के नीचे सब एराक्नॉइड स्पेस, यहाँ तक ये ट्यूमर सेल्स आ जाते हैं. एंड द कॉमन कॉम्प्लिकेशन विल बी, नंबर वन, एक तो ये ट्यूमर सेल्स यहाँ कॉर्टेक्स से डिसमिनेट करके बाहर आ चुके हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर जब ट्यूमर सेल्स आएंगे तो दे विल गिव राइज टू द, यहाँ पे काफ़ी बड़ा नोड्यूल बन जाएगा, सो दे विल गिव राइज टू द नोड्यूलर मैस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर. प्राइमरी ट्यूमर ये था, ट्यूमर सेल यहाँ से कॉर्टेक्स से डिसमिनेट होकर इन्फिल्ट्रेट होकर सब एराक्नॉइड स्पेस में, यहाँ पे काफ़ी बड़ा नोड्यूल बन जाएगा, ठीक है. और ये कहाँ तक जा सकते हैं, देखें गो एस फार एस, नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्डा एक्विना तक जा सकते हैं, ठीक है. और इनको हम ड्रॉप मेटास्टेसिस भी कहते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो यहाँ से ड्रॉप होके आगे की तरफ चले गए होते हैं. You understand this concept beta? If you want me to recap it a little, I can obviously. This is the main tumor. इसकी पेरीफ्री में से, इसकी एजेस में से ट्यूमर सेल्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं, कॉर्टेक्स को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं, पिया मेटर, एराक्नॉइड मेटर, एराक्नॉइड मेटर के नीचे सब एराक्नॉइड स्पेस के अंदर यहाँ पे नोड्यूल बनाते हैं, और नोड्यूल बनाते हैं, और ये बेटा काफ़ी आगे तक स्प्रेड हो सकते हैं, नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्डा एक्विना तक जा सकते हैं. इसको हम ड्रॉप मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से. द क्लिनिकल फीचर्स, द कोर्स ऑफ दिस ट्यूमर इज, दिस इज़ हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड द प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है. अगर आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया पेशेंट को तो पेशेंट का डिसमिसल हो जाएगा. अगर ट्रीट कर लिया विद द टोटल सर्जिकल एक्सिजन ऑफ द ट्यूमर एंड द रेडिएशन एज वेल, फिर 5 ईयर सर्वाइवल रेट 75% होता है, 5 साल बंदा चल जाएगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से. That's it beta. It's a very important poorly differentiated tumor, medulloblastoma, we just discussed, and here comes another poorly differentiated tumor, not of great importance, but still we have to read it. So what was the most common poorly differentiated tumor, embryonal tumor or the pediatric tumor? Medulloblastoma. Here comes another poorly differentiated tumor, so atypical teratoid or the rhabdoid tumor. ये भी उसी की तरह highly malignant tumor है, grade 4 tumor है, young children में होता है, especially before the age of the 5 years. ये it loves to rise from what side? The posterior fossa and the supratentorial compartments, यानी कि ये cerebrum में से और खास करके posterior fossa के region में से ये originate होता है, ठीक है. लेकिन इसका ये obviously it's a poorly differentiated tumor, तो इसमें काफ़ी divergent differentiation मिलेगी. You will come to find epithelial cells, mesenchymal cells, neuronal cells, glial cells, ठीक है, especially the rhabdoid cells.
I mean to say, this is a very poor differentiation wala tumor. If you look into this tumor under the microscope, you can't say, okay, this is a a very good looking tumor, and I can see the tumor cells, and the tumor cells are very much well differentiated. All the tumor cells are more like the neurons. All the tumor cells are more like the glial cells. You will not find this presentation. All the cells will be different. They will not be very well differentiated कि आप कह सकें कि ओके अच्छा ये ट्यूमर सेल्स हैं और ये तो न्यूरोनल सेल्स हैं, ग्लायल सेल्स हैं. If you look into this tumor under the microscope, you will find the epithelial cells. You will find the mesenchymal cells. You will find the neuronal cells. You will find the glial cells. So there is no differentiation. Okay, what is the underlying mutation that is responsible for the development of this bad baby? Atypical teratoid, a rhabdoid tumor. The underlying mutations are what? Alterations in chromosome number 22 in most of the cases, more than 92% cases. This is the hallmark of the rhabdoid tumor कि क्रोमोसोम 22 की म्यूटेशंस. ठीक है, और उस पर कौन सा जीन मौजूद होता है क्रोमोसोम 22 पे जिसकी डिलीशन हो जाती है म्यूटेशन की वजह से? HSNF5INI1 जो कि नॉर्मली इनकोड करता है प्रोटीन को. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लार्ज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स. अब कुछ यूँ होगा बेटा कि आपका क्रोमोसोम नंबर 22 का एक पोर्शन तो हो गया डिलीट. इसकी डिलीशन की वजह से इस पे मौजूद जो जीन था, जिसे वो जो जीन था बेटा कौन सा था? HSNF5INI1. ये जीन जो है वो भी डिलीट हो गया, जिसकी वजह से एक प्रोटीन की कमी हो गई जो कि नॉर्मली बनाता था. अब वो प्रोटीन कम होने से क्या होगा? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग नहीं हो पाएगी, और क्रोमेटिन रीमॉडलिंग ना होने की वजह से ये ट्यूमर डेवलप होगा जो कि काफ़ी पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है. क्या नाम बताया था बेटा? एटिपिकल टेराटॉइड ट्यूमर. एटिपिकल टेराटॉइड ट्यूमर. व्हाट अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ट्यूमर? ग्रासली वेरी लार्ज ट्यूमर it is. Very large tumor it is. It is having the soft consistency, but the main thing is behind the curtain, that is under the microscope. आपको पता है ना बेटा, इस एटिपिकल टेराटॉइड ट्यूमर को हम रेब्डोइड ट्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल्स होते हैं इसके अंदर मोस्टली रेब्डोइड सेल्स होते हैं, रेब्डोइड शेप सेल्स होते हैं, राइट? एंड व्हाट डू आई मीन बाय द रेब्डोइड सेल्स? हैव यू एवर सीन दिस cells? These are the cells these are the rhabdoid cells. Let me draw here. With the eccentric nucleus pushed to the periphery, eosinophilic cytoplasm, very sharp border of the cell, eccentric nucleus. When the cell size is small, the look, generally this is the tumor cell of the atypical rhabdoid tumor, but if the tumor cell is small, then the normal tumor cell of the atypical teratoid tumor, when the cell size is smaller, cytoplasm shows the elongated appearance. Cytoplasm shows the elongated appearance. Can you see? Cytoplasm showing elongated appearance. And it mimics the rhabdomyosarcoma cell. जो rhabdomyosarcoma बनता है उसके अंदर भी जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उसकी कुछ प्रेजेंटेशन इस तरीके की होती है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और साइटोप्लाज्म काफ़ी elongated होता है. Now it's time to make it easy. What type of poorly differentiated tumor are we discussing? Atypical teratoid tumor, जिसको हम atypical rhabdoid tumor भी कहते हैं. गुड हो गया. चलें, काफ़ी पोरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है. एपिथेलियल कंपोनेंट हो सकता है, मेसेनकाइमल कंपोनेंट हो सकता है, न्यूरोनल ग्लायल, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है. यू नेवर नो. व्हाट इज़ द मेन अंडरलाइंग म्यूटेशन? क्रोमोसोम नंबर 22 पे मौजूद पर्टिकुलर जीन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया. मेन चीज़ें अंडर द माइक्रोस्कोप. वैसे तो लार्ज ट्यूमर सेल्स होते हैं, इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है और ये एसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसी ट्यूमर के अंदर स्मॉल सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं विद द elongated cytoplasm, and this is actually resembling the rhabdomyosarcoma cell. गुड हो गया. चलें जी. Yeah, the cytoplasm of the rhabdoid cells, they show the intermediate filaments, not really important thing. The positive markers
In case of this tumor, atypical teratoid tumor, the markers which are positive are number 1, the smooth muscle actin and keratin proteins. Number 2, mitotic activity extremely prominent. ये highly malignant tumors हैं, grade 4 tumor है एज आई मैंशन. तो माइटोटिक एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होगी. इसके अलावा प्रोग्नोसिस, पेशेंट लिव्स लेस देन अ ईयर आफ्टर द डायग्नोसिस. समझ आई बात बेटा. ट्यूमर सेल के बारे में भी बता दिया कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. जो छोटा होता है वो रेब्डोमायोसार्कोमा से रिजेम्बलेंस रखता है. ट्यूमर मार्कर कौन से होते हैं वो बता दिए. माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. प्रोग्नोसिस की बात करें तो 1 साल से भी कम वक्त के लिए बंदा ज़िंदा रह पाता है. ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको. Atypical rhabdoid tumor, teratoid tumor, and yeah, this was all about the poorly differentiated tumors. We will now talk about another very important tumor, that is the meningioma, right?